Hello everyone, welcome back to the channel. Today I am taking you to one of the most peaceful and beautifully designed places in Yellagiri Hills, that is Fundera Park. If you are looking for a calm spot to relax, take photos or spend quality time with family while traveling through Yellagiri, this park deserves a place on your itinerary. So let's explore Fundera Park together. Fundera Park is located close to the main Yellagiri town area and it is very easy to reach by car or bike. The roads leading here are smooth, scenic and surrounded by greenery which already sets the mood even before you enter to the park. Parking is available nearby and the entry process is simple and well managed, making it convenient even if you are visiting with kids or elders. As soon as you enter Fundera Park, the first thing you will notice is how well planned and maintained the space is. The greenery, open walking path and artistic elements immediately give a calm and refreshing feeling. Unlike crowded tourist spot, this place feels relaxed and spacious. You can already sense that it's meant for slow walk, peaceful conversations and enjoying nature at your own pace. Every corner looks photo-worthy, whether it's the sculpture or neatly trimmed plants or the open lawns. This makes the park very special and popular among who loves photographer, couples and families who enjoy capturing memories. The park blends art with nature very well, giving it a unique identity compared to regular hill station parks. If you are someone who enjoys quiet moment during travel, this place is perfect to slow down and recharge away from traffic and noise. The best time to visit this park is during the morning or late afternoon. The weather is pleasant, the lighting is perfect for photos and you can avoid the harsh midday sun. Evenings are especially beautiful with soft light and cooler temperature, making the experience even more enjoyable. Tips before you visit to this park. Wear comfortable walking shoes. Carry water, especially if visiting during the day. Spend at least 45 minutes to 1 hour. I would say definitely 1 to 2 hours and truly enjoy the place. Keep the park clean and respect the surroundings. And while you visit and feed the pets, be careful.
This was our visit to Fundera Park in Yellagiri. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more travel and family friendly destination videos. Let me know in the comment if you have been to Yellagiri or if you are planning a trip soon. Thank you for watching my video and I will see you in my next video. Till then, stay healthy, stay happy and keep exploring. Bye bye. You wait. गुस्सु हेलानी अमेजन सर 40 years life गाइस हम लोग एक्चुअली फंडेरा का जो कैफ़े है ना, ये आवाज़ तो आप सुन ही सकते हो, तो हम एक्चुअली वहाँ पे बैठे हैं। व्यू बहुत ही बढ़िया है, आप दिखाओ, व्यू बहुत सही है, व्यू बहुत अच्छा है। ठीक है, और हम यहाँ पे अपना कोरियन बन, हॉट चॉकलेट, फिल्टर कॉफ़ी और पिज़्ज़ा भी ऑर्डर हुआ है कियान के लिए, वो आ रहा है, तो ये सब लेकर बैठे हैं।
मस्त अमेजिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त। गाइस हमने यहाँ पे खाया एक पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा जो कियान के लिए ऑर्डर किया था। एक कोरियन बन मैंने ऑर्डर किया था, आपने देखा होगा। कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी, 1 हॉट चॉकलेट, 1 वाटर। उसका बिल हमें आया है, आपको दिखाती हूँ, देखो, ठीक है। कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट का 30, कोरियन बन 120, ठीक है। टैक्स के साथ सब मिला के पिज़्ज़ा 180, वाटर बॉटल 1 लीटर लिया था हमने 20 रुपीज़ का, तो पूरा टैक्स वैक्स GST सब मिला के 380। नॉट बैड। अगर मैं बताऊँ रिव्यू दूँ तो खाना वॉज ओके इश, बट हॉट चॉकलेट वॉज रियली ग्रेट। बट आपको थोड़ा बहुत अगर स्नैक्स लेना है, आप बैठे हैं, ज़्यादा भूख लगा है तो खा सकते हो, तो वरना खा सकते हो, यू कैन ओके, स्किप। यू कैन स्किप इट। हॉट चॉकलेट बढ़िया था, मस्त। ना बेबी फीडिंग रूम भी है, बहुत अच्छा है। तो गाइस फंडेरा का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। हम अभी आए वहाँ से, हमने 375 का पैकेज लिया था, जिसमें पूरा फंडेरा का जो बर्ड पार्क वो सब एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड, फीडिंग द बर्ड, फीडिंग द पेट्स, सब कुछ अलाउ था जो भी आपने देखा। उसके साथ हमने एक एक्टिविटी भी किया, तो हमने फर्स्ट टाइम कियान को 7 डे एक्सपीरियंस करवाया, जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसने थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा उसको, बट ही एंजॉयड। तो मुझे तो वर्थ इट लगा। अगर आप आ रहे हो तो वही ले लेना, एक एक्टिविटी भी साथ में आप कर सकते हो। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो ट्रेन एक्टिविटी भी आप करवा सकते हो उसको। क्रिकेट भी था, बहुत सारी चीजें थी।